Good morning to all of you. So today we are going to hear a short video on meiosis. In the previous class we have studied about mitosis. So to avoid confusion, I decided to make two different videos so that your concept is very clear. So in mitosis we started that it is a type of cell division in which finally from one cell you have formation of two cells, and these two cells, two daughter cells which are formed, they are diploid cells. Okay, we studied two types of cells last time, diploid and haploid. Haploid are having half number of chromosomes, and the diploid means the double number of chromosomes or two sets of chromosomes. Okay, so mitosis and meiosis. So that was mitosis, where at the end from the parent cell and the daughter cells, they were exactly same in number of chromosomes also. Okay, ठीक है, एक सेल से हम स्टार्ट किए थे, दो सेल बना और वो दोनों सेल में उतने ही क्रोमोसोम्स थे जितना पेरेंट सेल में था. ओके, सो दैट वाज अबाउट माइटोसिस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मियोसिस. हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे दैट इन मियोसिस ऑकर्स इन गैमीट्स. गैमीट्स मीन्स वी हैव स्पर्म इन मेल्स and ova or egg in females. Okay, so here we will have, from one cell we will have four daughter cells, and all these four daughter cells will be haploid, that is half number of chromosomes. And why are we interested to have like that? Because when there is union of male sperm and the egg, the half chromosomes will come from the male side, half chromosomes will come from the female side, and they will form one parent cell. Okay, one cell will be formed. Okay, so half chromosomes from male, half chromosomes from female, or half from father, half from mother, and the one cell which will be formed, so that will have total 46 sets of chromosomes. So 23 pairs from the father, 23 pairs from the mother. Okay, so can you see this? Here is interphase. We studied what are the phases in interphase. We studied about G0, G1, S phase, G2, then M phase. Okay, so that this was all interphase which we have already studied. See, here we are talking about meiosis. So meiosis is a two step, meiosis 1 and meiosis 2. So in meiosis 1, what we have is formation of two cells. Okay, formation of two cells, but it is having only haploid. Okay, from this 4, 2 is here, 2 is here, but what you can see is crossing over has taken place. Okay, we studied last time crossing over. I will revise it again here. ठीक है, ये दो सेल में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है. कैन यू सी दिस डिफरेंस इन कलर? ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर. और इससे क्या बन रहा है, इन मियोसिस 2 यू हैव फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स, एंड दिस 4 डॉटर सेल्स आर हैविंग सेम 2. okay, same 2 numbers, that is haploid number of chromosomes. Okay, or half chromosomes, and 23 pairs of chromosomes. Okay, so this is how. And can you see this difference? Can you see this difference? Okay, so this type of differences will be there. This occurs because of the crossing over which has taken place. Okay, so we will study the things in detail. ठीक है, आपको बेसिक अभी डिफरेंस समझ में आ गया होगा. माइटोसिस में वी स्टार्टेड विथ वन सेल और फाइनली दो डॉटर सेल बना. वो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स थे दोनों में. दो डॉटर सेल 1 में भी 46 क्रोमोसोम, डॉटर सेल 2 में भी 46 क्रोमोसोम्स, पेरेंट सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, यहाँ पर व्हाट वी हैव इज वी स्टार्ट विथ 46 क्रोमोसोम्स विच डिवाइड्स इनटू 2. ओके, 23 23. ओके, ये 23 will go a mitotic division again, जो meiosis 2 में हो रहा है, and again this is having 23 23 only. Okay, so 23 pairs of chromosomes in each of the 4 daughter cells. चारों daughter cells में कितने हैं, 23 pairs, not 46. ठीक है, so this is the basic difference, and meiosis occurs in 2 stages. Now crossing over, this is a revision of what we had studied last time, because crossing over is occurs in meiosis, it does not occur in mitosis. Okay, so what is crossing over? Crossing over is the swapping of genetic materials. Swapping मैंने आपको बताया था last time, exchange of chromosomes. Okay, exchange of genetic material.
that occurs in meiosis 1, and during the formation of egg and sperm cells, paired chromosomes from each parent align so that similar DNA sequences from the paired chromosomes cross over one another. Okay, इस तरीके से align होता है one from the father and one from the mother, and they exchange. Okay, I will show you a diagram. So this is what we studied last time, the exchange of genes occurring between homologous chromosomes. So these are homologous chromosomes, and see there here exchange is going on. Okay, but one thing to remember is exchange is going on between two different homologous chromosomes. Okay, two different means here one from the father and one from the mother, and the exchange where it is taking place, this is called as chiasma. Okay, फिर अभी जो chromatids बन रहा है, so they are called as recombinant chromatids. Recombinants मतलब ये देखो नया आ गया है. Okay, you have red में blue आ गया, blue में red आ गया. ठीक है, so this is how recombinant chromatids बन जा रहा है. I will show you one more diagram. See here is crossover between non-sister chromosomes. Non-sister हम लोग पढ़े थे last time. What are sister chromosomes? ठीक है, ये green का एक और green है, that is sister chromosomes. पर crossing over किसमें होता है? Crossing over occur in non-sister chromatids. Okay, so one from the father and one from the mother, and this is the result. Okay, फिर यहाँ पे separate हो गया है. Now you have green में red color आ गया, red में green color आ गया. So this is how the exchange of DNA occurs between non-sister chromosomes. Sister chromatids, sorry, not chromosomes, non-sister chromatids. Okay, हम लोग chromatids पढ़े थे last time, homologous chromosomes same type. वो हम लोग जो last time पढ़े थे, but this is non-sister and this is signified by green and red color. Okay. Now what is meiosis? Meiosis is a form of eukaryotic cell division that produces haploid sex cells or gametes which contain a single copy of each chromosomes from diploid cells which contains two copies of each chromosomes. ठीक है, we start with 46, पर जो दो सेल पहले बन रहा है they contains 23 pairs. This is the meaning of this sentence, and it is a form of eukaryotic, मतलब हमने पढ़ा था last time, ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, they are called as eukaryotic cell division. Okay, so this produces a haploid sex cells from diploid cells. Diploid मतलब two sets of chromosomes था, उसमें से एक set बन रहा है, that is haploid. Okay, so ये ऐसा वाला cell division है, and the process takes the form of one DNA replication followed by two successive nuclear and cellular divisions, which is meiosis 1 and meiosis 2. We will study the things in detail now. Now there are two divisions in meiosis. First is meiosis 1, the number of cells is doubled. एक से कितना सेल बन गया? दो सेल बन गया. Okay, but the number of chromosomes is not. Okay, meiosis 1 में क्या हो रहा है? एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, but number of chromosomes is not doubled. It is halved. Okay, the result is half as many chromosomes in per cell. We start with 46 and two cells will be formed, they will get 23. Okay. Second division is meiosis 2. The division is like mitosis, the number of chromosomes does not get reduced. 23 है तो उससे दो, एक अभी एक से दो बन गया, दो में बना तो उसमें कितना है? 23, एक एक से फिर दो दो बनेगा. ओके, सेम एज माइटोटिक डिवीजन, पर वो 23 था, तो माइटोटिक डिवीजन में हम लोग को मालूम है 23 से स्टार्ट हुआ तो एंड में भी 23 ही रहेगा. सो यू हैव टोटल 4 सेल्स. ओके, यू हैव टोटल 4 सेल्स and number of chromosome does not get reduced. So first stage में there is reduction in the number of chromosomes. Second is same as mitotic division. See, the first mitotic division is a reduction division, that is diploid to haploid, in which homologous chromosomes are separated. Okay, अभी मैं diagram दिखाऊंगी आपको, the things will be clear. हम लोग ने last time prophase, metaphase, anaphase, telophase पढ़ा था. Same things are here only. क्यों 1 लिखा है? Why are we using the 1? Because this is in first phase. Okay, so chromosomes condense, the nuclear membrane get dissolves, homologous chromosomes form bivalents and crossing over occurs. Okay, so P1 that is prophase 1 में और 5 stage है, मैं आपको आगे की slide में दिखाऊंगी. It is that stage where crossing over occurs. Okay, so in that way this is different. M1 हमको phase मालूम है, spindle fibers from opposite centrosome connect to bivalents at centromeres
and align them along the middle of the cell. आपको याद आ रहा है क्रोमोसोम्स कहाँ पर आ गया, बीच में आ गया, स्पिंडल फाइबर्स है which are attached to it. Okay, same thing which we studied in the last one. Okay, and what is anaphase 1? स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड जो क्रोमोसोम्स था वो आधा ऊपर की तरफ चले गए, आधा नीचे की तरफ चले गया, दैट इज दे मूव टू दी ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स. एंड T1 क्रोमोसोम्स डीकंडेंस, जो मोटा हुआ था पतला हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रिफॉर्म and cell divides or cytokinesis into two haploid daughter cells. Okay, now this is prophase 1 is divided into 5 phases. मैंने आपको बताया अभी हमारा meiosis 1 हुआ, meiosis 1 में you have all the stages P1, M1, A1 and T1. P1, M1 बाकी सब सेम है, there is no difference. Main changes is occurring in P1, ठीक है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जो माइटोसिस में नहीं हो रहा था. So P1 or prophase 1, you have 5 stages which we are going to study in the next slide. Okay, now this is the 5 phases of prophase 1: leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis. Now what is leptotene? Chromosome starts to condense. What is zygotene? Homologous chromosomes become closely associated or synapses to form pairs of chromosomes, that is bivalents, consist of 4 chromatids, that is tetrads. Okay, मैं आपको आगे डायग्राम्स में दिखाऊंगी. Pachytene, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन pairs of homologous chromosomes to form chiasmata, सिंगुलर में chiasma. हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे chiasma, it is same thing. Diplotene, the homologous chromosomes start to separate but remains attached by chiasma. And dikinesis, homologous chromosomes continue to separate and chiasma move to the ends of the chromosomes. Okay, ये इसमें 5 स्टेज है, आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊंगी, तो वॉट एवर आई हैव रेड हियर विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ दीज आर द फेजेस. ठीक है, सबसे पहले क्या है, लेप्टोटीन. ओके, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दीज आर द क्रोमोसोम्स. क्या हो रहा है द फर्स्ट स्टेज में इन लेप्टोटीन, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कंडेंस. ठीक है, जो क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हुआ है वो क्या हो रहा है, दे आर कंडेंस्ड. ओके, कंडेंस हो गया. ओके, मोटा हो गया. ज़ाइगोटीन, देर इज बाईवेलेंट. बाईवेलेंट मतलब जितना क्रोमोसोम्स है वो दो का जोड़ी बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बाईवेलेंट फॉर्मिंग. बाईवेलेंट फॉर्मिंग, हैव यू अंडरस्टूड? दैट इज टू क्रोमोसोम्स का पेयर्स बन रहा है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज बाईवेलेंट फॉर्मिंग. ओके, सो दिस इज बाईवेलेंट फॉर्मिंग. ये देखो, ये एक ग्रीन ब्लू एंड रेड ऐसा जोड़ी बन गया, यहाँ भी ब्लू एंड रेड, यहाँ भी ब्लू एंड रेड. सो दिस इज हाउ दिस बाइवेलेंट फॉर्मिंग इज देयर. एंड उसके साथ में क्या हो रहा है, साइनेप्सिस बिगिंस. नाउ व्हाट इज साइनेप्सिस, कैन यू से दिस? एक रेड और ब्लू के बीच में साइनेप्स मीन्स एक जुड़ा हुआ है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग. जिस जगह में बाइवेलेंट फॉर्मिंग हुआ, किसका, क्रोमोसोम्स का, जो आपस में जुड़ा वाला एरिया है, so that is called as synapse and this is called as synaptimal complex forming. okay, तो synapse बन गया. ठीक है, फर्स्ट स्टेज याद आ रहा है, क्रोमोसोम्स मोटा हो गया, दैट इज कंडेंसेशन. जाइगोटीन में बाइवेलेंट पेयर्स में बन रहा है. ठीक है, पेयर्स बन गया, साइनेप्सिस हो गया. ओके, पेयर्स बन गया और साइनेप्सिस हो गया, दैट इज synaptonimal complex forming. now pachytene में now crossing over has occurred. See, this is crossing over. Okay, we now know about crossing over. ठीक है, so जहाँ ये ऐसा attachment हुआ, so now you have crossing over. A bivalent is formed and crossing over has occurred. ठीक है, crossing over, ये देखो यहाँ पे ब्लू में रेड आ गया, रेड में ब्लू आ गया, so इस तरीके से हो गया. ओके, so this is pachytene where crossing over occurs. Now what is diplotene? Diplotene is, now there is chiasma formation and this synaptimal complex dissociates. जो यहाँ अटैच हुआ था अब क्या हो रहा है, अलग होना स्टार्ट हो गया है. ओके, once crossing over has occurred, now there is no need to be together. Now dissociation start हो गया. ओके, अलग हो रहा है. Now dikinesis, the nuclear membrane gets fragmented. There is end of prophase 1. यहाँ पे अब कोई कनेक्शन नहीं है. ओके, so this is end of prophase 1. I will just revise. Leptotene, first stage, there is condensation of chromosomes.
क्रोमोसोम्स थिक हो गया, यह मोटा हो गया. इन जाइगोटीन देयर इज बाईवैलेंट फॉर्मिंग. बाईवैलेंट मतलब क्रोमोसोम्स एक एक पेयर में हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड एंड ब्लू इस तरीके का पेयर बन गया. एंड देयर इज सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग. Then spatchitail is a stage where crossing over is taking place. We know what is crossing over now. A bivalent has been formed and crossing over has occurred. Now in diplotene, chiasma हमको मालूम है, the place where this occurs is called as chiasma, and cytonymal complex dissociates. जो join हुआ था वो क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है. ठीक है, it is separated, and then it is dikinesis where the nuclear membrane fragments, and it is end of prophase 1. ठीक है, but I think now the concept is clear about prophase 1. So this is the first stage of meiosis, where in prophase 1 crossing over is taken place. In metaphase, this is how centromere with kinetochore. Last time we have already studied in mitosis. This has taken place. Then anaphase, they start to separate, and finally you have formation of two cells, but these are all having crossed over cells. Okay, cells which are having features of see here is blue and red. So this is how you have crossing over which is taking place. Okay. Now meiosis 2. What is meiosis 2? The second division separates the sister chromatids, and these chromatids may not be identical ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. मैंने फर्स्ट स्लाइड आपको दिखाया था. ये स्टेज होने के बाद एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 दो सेल बन गया, बट क्रोमोसोम्स आर डिफरेंट नाउ. व्हाई? बिकॉज नंबर इज सेम. आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर हाफ हो गया है, नंबर इज हाफ, बट बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर you have features of both of different size. Okay, जो first में है और जो second में है, so that will be sometime different. Okay, so this is how crossing over. So it has features of both, similar features are there. Okay, but because of the crossing over, so this is how it is there. Okay, now in meiosis 2 again same thing. Prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2, same thing which is occurring. Prophase 2, chromosomes will condense, nuclear membrane will dissolve, centrosome moves to opposite poles. Okay, then in metaphase 2, spindle fibers from opposite centrosome attach to the chromosomes at the centromere, and they line at the middle of the cell. And anaphase, they contract and they separate to the and move to the opposite poles. And in telophase, the chromosomes decondense, the nuclear membrane reforms, the cells divide and forms 4 haploid daughter cells. Okay. The final outcome of meiosis is production of 4 haploid daughter cells. Haploid I have told, each of it will contain 23 chromosomes, and these cells may be genetically distinct if crossing over occurs in prophase 1. Okay. Prophase 1 में crossing over हो गया है, so that is why ये चारों cells will be genetically different. Okay. That is why if you remember जब genetic disease होता है, जैसे for if you take example of sickling, ठीक है, तो sickling में हर suppose if you have a carrier of sickling and a patient of sickling who is there, अगर इनका उनका egg or sperm if they if they produce a zygote, तो क्या होगा, there are chances 1:4 chances. Okay, क्योंकि किसी में नॉर्मल चाइल्ड पैदा हो सकता है, किसी में सिकलिंग ट्रेट वाले पैदा हो सकते हैं, सम देयर इज चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ चाइल्ड विद सिकलिंग. इस तरीके के डिफरेंसेस है, इसलिए दैट इज व्हाई these cells may be all genetically different. Okay, these 4 cells may be genetically different because of the crossing over which is taking place. Okay, can you say this? देखो इंटरफेस था, प्रोफेज 1 क्रॉसिंग ओवर हो गया, मेटाफेस इज देयर एंड यू हैव 2 cells. ठीक है, ये 2 cells से फिर स्टार्ट हुआ, सेम प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 phases are just same as we have studied. यहाँ क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो गया, यहाँ के बीच में आ गया मेटाफेज में, एनाफेज में दे बिकम सेपरेटेड, एंड नाउ इस सेल से भी 2 बन गया, इस सेल से भी 2 बन गया,
and finally you have formation of 4 cells. So, this is how there are formation of 4 haploid cells in meiosis after meiosis 2. Okay. Now, what is the importance of meiosis? It allows sexual reproduction of diploid organs. Okay. It enables जेनेटिक डाइवर्सिटी का मैंने आपको बताया, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाला है तो हर बार जेनेटिक डिसऑर्डर वाला हमेशा जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा नहीं करेगा, विल डिपेंड ऑन विच आर द सेल्स, कितना % चांसेस है. तो किसी में बोलते हैं कि 50% चांसेस है दैट यू विल गेट in each of the pregnancy there are 50% chance of having a normal child, 50% of having a diseased child, sometimes it is 25% depending on फादर का जेनेटिक मेकअप कैसा है, मदर का जेनेटिक मेकअप कैसा है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है. सो इट अलाउज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गन्स एंड इट एनेबल्स जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, और अभी आप इमेजिन कर लिए, सपोज इफ ऐसा हाफ क्रोमोसोम्स नहीं होता. ओके, सपोज इफ इंस्टेड ऑफ 46 का 4 सेल्स में 46 रहता, तो क्या होता, व्हेन वन सेल इज फॉर्म दिस वुड हैव बीन बिकम डबल. ठीक है, अभी डबल नहीं हो रहा बिकॉज इट इज 23 पेयर्स. एग में भी 23, स्पर्म में भी 23. सो व्हेन दे यूनाइट एंड फॉर्म वन सेल, it will have 23 pairs of chromosomes from male side, 23 from female side, and you will have again 46 chromosomes from in one zygote. Okay. So, it aids in repair of genetic defects. Aids in repair of genetic defects means genetic defects hai. So, whenever there are especially in cases of genetic counseling, अगर genetic disorders है, suppose sickling है, maybe Down syndrome, any chromosomal disorder, there is always a genetic counseling which is done, जिसमें ये इंश्योर करते हैं कि कितना % चांस है डिपेंडिंग ऑन दोनों पार्टनर्स का जेनेटिक मेकअप कैसा है. ओके, so this helps in repair of genetic defects. For example, suppose if you have a person who is a case of sickling, if he gets married to a case of sickling, so the chance of producing a child with sickling is 50%. Okay, but if this person marries a normal person, if a person with sickling disease marries a normal person, so this chance may be to 25%. Okay, so this is how you repair the genetic defects. Okay, next is this then for genetic defects we have different methods how, to what extent we can do. We cannot do much, but yes, we can still assess whether there are chances that the child which is going to be born will have that disease or not. So, that part of genetic studies are still available, and in that way we can repair also. So, responsible for formation of sex cells or gametes that are responsible for sexual reproduction. Okay. So, we know that meiosis occurs only in gametes, not in other cells, and this activates genetic information for the development of sex cells, and it maintains constant number of chromosomes by halving the same. Having is here, it is HAL, that is half. Okay. So, constant number, that is 46 chromosome का number maintained रहेगा by this meiosis, because 23 will come from father side, 23 will come from mother side. So, the zygote will have 46 chromosomes. So, that was all about meiosis from my side. I think you have understood the difference in mitosis and meiosis. Just to sum up, I would like to just tell, meiosis में एक सेल से 2 सेल बन रहा है. जो पहले सेल जिससे स्टार्ट किया उसमें भी 46 क्रोमोसोम था. जो 2 सेल बनाया, सपोज ए और बी हुआ, ए में भी 46 है, बी में भी 46 है. ठीक है. मियोसिस में ऐसा नहीं है. मियोसिस स्टार्ट्स विद 46, मियोसिस 1 हुआ, ये 46 में कितना हो गया, 23 हो गया. ये 23 का 2 सेल, फिर माइटोसिस डिवीजन रहता है जिसको हम मियोसिस 2 के नाम से जानते हैं. अगेन विल फॉर्म 4 सेल. पर ये चारों सेल में 2 चीज़ है. One is each of them will have 23 chromosomes, but genetic makeup of all these cells might be different. Okay, so that is the difference between mitosis and meiosis. I hope you have understood the topic. Thank you for a patient listening.